Good afternoon, everyone. I will request Dheeraj, आप इसको थोड़ा fast चला दीजिएगा so that we can save some time. Honorable Secretary School Education and Chairman CBSE and other eminent dignitaries from Ministry and other institutes of Ministry of Education, my colleague from CBSE and all esteemed principal. Promoting skill education in school, the agenda evolved, if you look into, as both Anurag ji as well as Professor Bhargav has rightly mentioned, how integrating skilling and vocational education was duly conceptualized in new education policy. And as we are already in study mode, that is the NCFSE document, there is a correct interpretations how integrated way we can really offer skill subject right from grade 6 onwards. And there, if we look into the present scenario, the largely based on the NEP recommendation, CBSE has started offering 34 skill module, each of 15 hours. And these module, of course, we have tagged to offer for 6 to 8, but based on the demand of the school leader, we have opened this module for any class, so that the ray of vocationalizations or skilling reach to each and every student. Next, please. So, reimagining vocational educations categorically, if we look into our perspective in schooling, and especially in CBSE school, earlier our major concern was to integrate skilling only at grade 11 and 12. And if you look into the policy, again, as I have mentioned, the integration was the major focus. The second focus, which how 50% of the learner we can bring under the MB top skilling, and how it was also ensured through NCFSE that how every child in school can get exposed to at least one skill subject, which is a huge recommendation. And I think through NCFSE, the policy formulation, and especially my humble request to school leader, how you can introspect these things with the presence ongoing infrastructure, how you can offer at least one skill subject right from grade 6. Now that readiness need to be introspect, and gradually school need to come up with its own plan. Of course, there are certain logical issues, logistics issues, that my request to you, you come up with the solution. Prescription is one agenda, but how we can really aim to offer this from our side, from the board perspective, we are definitely going to give some action plan. But before that, we want to listen so that it becomes nothing is prescriptive. Some things you yourselves are owning, and ultimately the country can place itself more than a developed nation. Because in any skill presentation, anywhere we are discussing, whether it is CII-led or FICI-led, everywhere, one slide at least I can visualize, that is Korea 96%, China more than 80%, Germany 75%. These are all formal skill enrollment. But whenever the India's figure comes, it is still struggling to move from single digit to double digit. I think without your active participation, this reimagination is not really possible. So here, primarily, we need a skill lab, or so-called vocational lab, or finding a way out how easily we can utilize existing infrastructure in school offering
skilling from grade 6 to 8. What would be the solution? The number one, all affiliated schools of CBSE is having good ICT lab, number one. Number two, many of our both government run as well as independent schools are having Atal Innovation Lab. Third, in the neighborhood, good number of schools are having associated with any professional college. It could be hotel management, it could be engineering, and time and again CBSE issues circular to the school to associate with some kind of local industry. From the side of the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, the nomenclatures of skilling in terms of associating with ITI, from AICT, associating with local polytechnic, these are very much there. But my question is, how many of us actually taking the support of those institute and infrastructure lying nearby? Can you respond? Kitne? Because all elite schools principals are here because ये जो process of selection है जहाँ पे CBSE का बोर्ड रिजल्ट्स एंड अदर पैरामीटर को देखते हुए आप सब लोगों को न्योता दिया गया है माननीय सचिव महोदय से इंटरेक्ट करने के लिए। आप लोग बताइए, आप लोगों में से कितना स्कूल लोकली अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर को आपने आज तक यूटिलाइज किया? So out of 100 or 50 or so, a good number of hands are coming. It's definitely we are moving in a positive direction. Next, please. अगर जेनेसिस देखेंगे बोर्ड का 1979 से, and then unlike PCM, PCB और accountancy, business studies, math, CBSE कभी vocational stream भी चलाते थे. And अगर इस स्लाइड को देखेंगे, जॉब लिंक वोकेशनल कोर्स वाज वेरी मच पॉपुलर इन सीबीएसई स्कूल. हो सकता है सिलेक्टिव गवर्नमेंट स्कूल और सिलेक्टिव प्राइवेट स्कूल्स में चलता था, बट गिने चुने इंस्टीट्यूट उनको एम्प्लॉयमेंट देते थे. लेकिन इकोनॉमिक इश्यूज के माध्यम से देयर आर सर्टेन क्राइसिस, सर्टेन अपॉर्चुनिटीज आर आल्सो इवॉल्विंग. तो वो चीज अभी नहीं चल रहा है. Abhi, as a standalone, again based on the feedback of CBSE school principal, we introduce a standalone vocational subject, and gradually under NBEQF and followed by NSQF and followed by NEP, अगर आप लास्ट 2024 को देखेंगे तो हम आज का तारीख में 34 स्किल मॉड्यूल, 22 स्किल सब्जेक्ट एट सेकेंडरी लेवल एंड 43 स्किल सब्जेक्ट एट सीनियर सेकेंडरी लेवल हम ऑफर करा रहा है. नेक्स्ट, आई एम स्किपिंग दिस. हाँ, ये स्किल मॉड्यूल का जस्ट एक रूपरेखा आप सब लोगों को पता है. तो ये फील्ड देखिए, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉटरी टू सैटेलाइट और यहां पे एआई टू मास मीडिया, हर तरह का स्किल मॉड्यूल उपलब्ध है. अभी इसमें अगर रुचि नहीं है बोल के अगर कोई स्कूल मना कर देगा, वो बात मानने के लिए हम लोग तैयार नहीं हैं. क्योंकि हर बच्चे को, चाहे अर्ली ईयर्स हो, चाहे वो पोटेंशियली प्रिपेयरिंग फॉर ऑल काइंड ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कुछ ना कुछ विषय में उसका रुचि आवश्यक है. और उसको हम वोकेशनल उस ट्रेडिशनल माइंडसेट का साथ जोड़ नहीं रहा है, हम इसको स्किलिंग बोल रहा है. और उसमें आपका ऑल कॉम्पिटिटिव स्किल्स, ऑल रादर आई शुड टेक अप 21st सेंचुरी स्किल, किसी ना किसी तरह हम जुड़ सकते हैं. नेक्स्ट प्लीज. इसको भी हम, हाँ, ये आज का तारीख में जो बच्चा हम ऑफर कर रहे हैं, वी हैव ए इंडिपेंडेंट साक्ष पोर्टल जिसका द्वारा स्कूल बेस्ड असेसमेंट में ये है. जो एनसीएफएसी इंटरनल असेसमेंट्स का बात कर रहे हैं, इसमें कंप्लीटली इंटरनल असेसमेंट और स्कूल ही उसको फिलअप करके जहां पे रिकमेंड कर रहे सीबीएसई से सर्टिफिकेट जनरेट होता है. नेक्स्ट, अगर सेकेंडरी लेवल पे हम देखेंगे तो डेफिनेटली
कुछ अच्छा रोचक फिगर हम आप लोगों को दिखा सकते हैं, आईटी से लेके एग्रीकल्चर तक, लेकिन ज्यादातर मास बेस्ड, जैसे मैं शुरुआती दौर में बोल रहा था, आईसीटी लैब का हमारा सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स पूरा इस्तेमाल कर रहा है। एंड दैट्स व्हाई अगर हम जर्नी 2012 में हम लोग 19 स्कूल से सेकेंडरी लेवल पे वोकेशनल का यात्रा शुरू हुआ है, और आज का तारीख में इट इज क्लोज टू 19,000 स्कूल। हालांकि मैक्सिमम स्कूल, मोर देन 70% स्कूल आर ऑफरिंग आईटी एंड आईटी अलाइड सब्जेक्ट्स, बाकी कुछ सब्जेक्ट्स को भी रुचि दिखा रहा है स्कूल, बेस्ड ऑन द जियोग्राफिकल लोकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल। नेक्स्ट। सिमिलरली एट ग्रेड 11 एंड 12 उतना तेजी से हम सीनियर सेकेंडरी लेवल पे नहीं पहुंच पाया है बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। रीजन, चैलेंज क्या है आज का तारीख में यूनिवर्सिटी सिस्टम्स में, अगर उस सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट 11-12 में बच्चा ले रहा है उसका अगर सही तरह रिकॉग्निशंस नहीं है, तो मेनी ए टाइम स्कूल प्रिंसिपल डिस्करेज टू ऑफर द सब्जेक्ट्स इन द यूजुअल कॉम्बिनेशन। और इसी तरह जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन भी हो रहा है उसमें भी जो सब्जेक्ट लिस्टिंग नहीं होगा तो देयर इज ए सम सॉर्ट ऑफ डिस्कॉर्ड। बट एट द सेम टाइम देयर इज ए अर्जेंट नीड टू एड्रेस द इशू जो इनिशियली स्वयं जी फ्लैग कर रहे थे, जो बकेटिंग ऑफ सब्जेक्ट एज पर एनसीएफएसी, ऑल्दो इट इज ए इलस्ट्रेटिव इन नेचर, बट वहां पे देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट ग्रुप 1 से 2 सब्जेक्ट लेना है और ग्रुप 2, 3, 4 मिला के 4 सब्जेक्ट लेना है। तो पॉसिबिलिटी, अगर किसी स्कूल प्रिंसिपल रिजिड हो जाते हैं कुछ देर के लिए, नहीं हम तो ग्रुप 3, 4, 5 से ही सब्जेक्ट ऑफर करेंगे, ग्रुप 2 से ऑफर नहीं करेंगे, देन एनईपी रिकमेंडेशन ऑन टचिंग एवरी इंडिविजुअल स्टूडेंट टुवर्ड्स वोकेशनलाइजेशन किसी जगह पे वो सीमित हो जाएंगे। तो वी नीड टू रीलुक, बट सीबीएसई का स्कीम ऑफ स्टडीज वी आर ट्राइंग टू डेवलप इन ए मैनर सो दैट एवरी चाइल्ड, एवरी स्कूल सामूहिक, अगर 10वीं तक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, टीचर होगा, तो डेफिनेटली स्कूल अपने आप मोटिवेट होगा सीनियर सेकेंडरी लेवल पे भी उस छात्र को सब्जेक्ट्स लेने के एनकरेज करने के लिए। काफी सारे सब्जेक्ट्स है, डिजाइन थिंकिंग से लेके ऑटोमोटिव, फिनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट से लेके फैशन स्टडीज, योगा भी अच्छी तरह, इवन अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन का ऊपर भी सीबीएसई कोर्स ऑफर कर रहे हैं, जो कि ए सिंगल सब्जेक्ट है, बट देयर इज ए डिमांड फ्रॉम द स्कूल। अभी मैं इन फ्रॉम कोलकाता एंड रांची देयर वाज ए डिमांड, कैन दिस सब्जेक्ट्स be recognized for our early year teachers, unlike the diploma and all. So we may like to work with NCT to get due recognitions of this kind of skill subject also. Next, joint certificate दिया जाता है with many institute जिसका साथ CBSE ने agreement sign किया, जो industry भी है, और Ministry of Skill Development and Entrepreneurship का द्वारा CBSE, NCBT का द्वारा CBSE को एक असेसमेंट एंड अवार्डिंग बॉडी की तरह रिकॉग्नाइज किया गया है। तो सीबीएसई कैन क्रिएट द कोर्स, ऑल्सो टेक अप द जॉब रोल्स एज रिकमेंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जिन्होंने कुछ जॉब रोल्स को अपना समग्र शिक्षा का अंडर में रखा गया है, और एट द सेम टाइम सीबीएसई अगर स्पेसिफिक जॉब रोल में अगर जाए तो दे कैन टेक द ड्यू अप्रूवल फ्रॉम द एनसीबीटी, और उस प्रोसेस में हम लोग कर रहा है अभी। नेक्स्ट पीएमकेवीवाई 3.0 एंड 4.0 का द्वारा both our government schools, Commissioner JNB and Commissioner KV is very much present, good number of schools of CBSE, both government systems as well as from the private systems, प्राइवेट इंडिपेंडेंट स्कूल्स को भी रोप इन किया गया है, जिनका स्कूल में लैब है। बहुत सारे स्कूल ने अप्लाई किया है ऑन फिक्स्ड जॉब रोल, और मेरे को खुशी हो रहा है आपसे शेयर करने के लिए दैट मोर देन 281 प्राइवेट इंडिपेंडेंट स्कूल्स गॉट
training fees from Ministry of Skill Development. And but or another two more minutes, sir. Next. So these are all good achievement jointly carried out with the support of Ministry of Education. This is very important for all the school leader. A compendium, because बहुत सारे parents का तरफ से, बहुत सारे principal का तरफ से इन silos queries आता है, क्या vocational subject लेने का बात क्या है? So CBSE website में compendium of career and education pathway 39 skill subjects का बात क्या क्या है, ये सारे उपलब्ध है, और ये इसको हम रिवाइज भी करने जा रहा है, so that more information we can give it to you. Next. Next. May just 2 more minutes I'll take. Credit framework एक important topic है, और जिसको implement करने के लिए Ministry of Education CBSE को specially बोला गया है. And under this national credit framework, हम अभी pilot implementations के लिए more than 2000 schools को select किया है, और जहाँ पे grade 6, grade 9 and grade 11 में with the SOP available we are going to implement, and gradually we'll understand जो other NEP recommendation है, especially the bagless day and special effort taken by the child by participating any kind of national or international student enrichment program or sports event, how this can be creditized. So one is basic framework understanding, other is from the field experts, from the practitioner, will take to understand, and those cumulated information by end of this year we are going to share with the ministry, and so that a comprehensive decisions we can take, so national credit framework can be implemented across the schools for all the classes. With this, let me stop here because this slide is important, but maybe during the question answer time we can discuss. Thank you very much.